and Insolvency Professional Anuradha Gupta welcome you all on behalf of JIPA Professional Association. And it has been a great pleasure to be a part of this beautifully designed webinar and interacting with such dynamic, learned, intellectual, knowledgeable people of the profession. I'll pass on the dais to Rashmi ji. Thank you, Anuradha ji. I, Rashmi Chowcharia, an insolvency professional and chartered accountant from Kolkata, on behalf of JIPA Professional Association, welcomes you all in this webinar. This will be a session on discussion protection of IP against disciplinary proceedings of IBBI. And as we all know that this seminar is a need of the hour, because we can see a lot of cases by the disciplinary proceedings announced against the insolvency professional, and we are a lot more, thinking that how to protect ourselves, how to be in this profession, continue to stay in this profession. So JIPA is again with us, organizing this beautiful seminar for to enrich ourselves in this. And now, before we start, let me just give a brief intro about JIPA Professional Association. JIPA Professional Association is the company incorporated under Section 8 in India, with main object to provide all kind of awareness and facilitation services for business professionals and students in India and abroad. Mr. Parveen Jain is one of the promoter of the JIPA. And with this, I would like, not wasting much more of the time, I would like Praveen ji to come introduce our guest of honor for today. Thank you, Rashmi ji. Thanks a lot. And respected Rashmi ji, Anuradha ji, and all participants, and our respected sirs, Hansala Chugh ji. Some brief about Hansala Chugh ji. He is a fellow CA, fellow company secretary, law graduate, and insolvency professional also. He has more than 3 decades of experience in the professional practice relating to indirect taxes, foreign trade law, including foreign trade policy, custom, foreign exchange, and management act, FEMA, GST, indirect tax related matters, and related matters. And he is currently central council member of ICI for the 2022. Sir, also director of III. He is also associated with various social organizations, Rotary Club, Lions Club, etc., and professional and various business chambers. With this, I would like to request to please guide us to how to protect our profession or professionals from regulatories and also from market leaders. Please, sir. Thank you, Parveen ji. At the outset, really, I'm very grateful and thankful to the whole team of the JIPA Professional Association for initiating all the programs which always remains as a relevant and the need of the hour. Rashmi ji has well said, so many notices are coming from the whether it is the IPA or from the IBBI. Anuradha ji has well started with. And naturally, if we all understand with this law as such, though our honorable speakers will be touching upon this subject more, which is the relevant as on date, and which will be continue to be relevant for the time to come also, because ये एक ऐसी चीज है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देखा गया है कि भाई आप जब भी कोई प्रोफेशनल एक्टिविटीज करते हो तो गलतियां भी होंगी, तो गलतियों के बाद जो है कोई इश्यूज, क्योंकि so many issues are there where the difference of view are there. Those who are the outgoing boards, they have the different view. Regulators have a own way to understand with the NCLT. Have a other ways to understand with, and otherwise all the stakeholders. If we talk about in the case of the real estate, different stakeholders are involved. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे issues रहेंगे ही रहेंगे कि जहाँ पे इंसान को कहीं ना डिसीजन प्रोसेस लेना पड़ता है, डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब डिसीजन लेते हो तो डिसीजन के अंदर बहुत सारे सिस्टम के अंदर आप अपने जजमेंट को जो है सिस्टम में डाल के देखते हो, तो उसे अकॉर्डिंगली इट कैरीज विद. तो डेफिनेटली जो है, बट द लॉ इटसेल्फ हैज ए सम काइंड ऑफ द
preamble to work on. So at the outset, I'm very grateful and thankful to the Parveen ji and the Piyush ji also for inviting me here. और जो हमारी IBC की कमेटी है उसमें जैसे आपने अनुराधा जी को सुना, रश्मि जी और गोयल साहब भी हमारे साथ में हैं, और जो स्पीकर साहब हमारे आज के जो है निपुण जी और RK गुप्ता जी जो रहेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आशीष मखीजा जी we all may be aware of he lost his mother. So yesterday only I got a message from him also because of some maybe it's a really been a difficult time for him, so he could not be made himself available today. लेकिन फीलिंग ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्टिविटी के द्वारा इस लॉ को देखते हैं, इस लॉ की जो रिलेवेंस को देखते हैं सोसाइटी, इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर या कॉमर्शियल सिस्टम के अंदर, और बहुत सारे जो अनचैलेंज्ड तरीके हैं, जैसे हम कहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल के लिए, लेकिन बट ऑब्वियस है ये अपॉर्चुनिटीज है फॉर द रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। लेकिन किस कारण से कंपनी स्ट्रेस में आई है, किस कारण से कॉर्पोरेट जो है स्ट्रेस में गया है, देयर कैन बी टू रीजंस, आइदर एक्सटर्नल फैक्टर्स और द इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जहां पे होते हैं वहां चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां सम इल डूइंग बाय द आउटगोइंग बोर्ड। इफ वी टॉक अबाउट सो मेनी केसेस वेयर देयर इज दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस कम्स इन, कि उनके थॉट प्रोसेस अलग होते थे, बिजनेस के मैकेनिज्म, बिजनेस के करने के तरीके अलग होते थे, और उनको उस तरीके से एक्सेप्टेंस थी पहले, लेकिन नाउ डेज इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद, तो उस केस में चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। और क्योंकि इस लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है कि रिजोल्यूशन को लेके आना और वेल्थ को, जो उसकी असेट्स को मैक्सिमाइज करना, असेट्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, और क्रेडिट सिस्टम के अंदर जो है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थी उनको एट द स्पीडी, उन्हें स्पीडी बेसिस, उन्हें मैकेनिज्म बेसिस पे इसको लेके आना। बट ऑब्वियस है वेदर इट इज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स or the otherwise other professional around them, so they all face some kind of challenges. और over a period of time जितना litigative methods होता है उसमें challenges ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना होता है, though if all justified manner we are doing our duty and we are definitely performing to the best level, तो हमें कहीं डरने की जरूरत नहीं होती। पैरामीटर सिंपल है, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं और लॉ ग्रेजुएट हैं या और कोई बैंकर्स हैं या कुछ भी हैं, तो हमें भी पता है कि इथिकल्स क्या है, इथिक्स क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कैसे शुरू होती है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आइदर फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सम कंप्लेंट्स मेड बाय द सम स्टेक होल्डर्स, और मे बी फॉर सम अदर रीजंस समथिंग विच हैज नॉट बीन फॉलोड on a as per the regulation or as per the law involved, so it starts with, so we have to understand that today fortunate enough ki today speakers available with us are very knowledgeable, they understands the law, they have the practical issues, practical understandings also, like RK Gupta ji or the Nipun Singhvi ji, they have the practical exposure into this area. They will be justifying the subjects also, and all the participants will be benefited out of the deliberations and the practical approach, the manner of the deliberation. मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सब जो है कलेक्टिवली कहीं कोई चैलेंजेस जो आते हैं, रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, चाहे वो बोर्ड को है या थ्रू दी IPA है। आई एम बीइंग ऑन द बोर्ड ऑफ द IPA, ट्रिपल IP ICI, wherever you find where I'm always there with my professional fraternity without any agitation, you can approach me, and wherever the issues of the collective natures are there, we are always with an open heart on the triple IPI also. We are always in the support of the profession, provided it is justified within the parameters, within the regulation allowed. तो इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं दोबारा से जो है परवीन जी एंड पूरी टीम को जो है धन्यवाद करता हूं, और जो हमारे आज के स्पीकर्स हैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, और पार्टिसिपेंट्स को भी कि दे हैव हर्ड मी, दो आई हैव अ लिमिटेड रोल, द स्पीकर्स आर देयर विद अस
to speak on these subjects. Thank you all. Thank you very much. थैंक यू हंसराज चुग जी, थैंक यू सो मच हमें ये एश्योरेंस दिलाने के लिए कि आप अपने बोर्ड की तरफ से हमारी हैंड होल्डिंग करेंगे और हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होगी विद इन लिमिट्स आप हमें मदद करेंगे. थैंक यू सो मच. एक तो अभी जैसे हंसराज चुग जी ने कहा कि हमारे स्पीकर थे आशीष जी, जिनके साथ हमें पता चला है कि उनकी देयर वाज अ सैड डिमाइस ऑफ हिज मदर. तो हमें आई वांट यू ऑल टू कीप 2 minutes साइलेंस फॉर दैट. Now let's proceed. And अभी हमारे बीच में चेयरमैन ऑफ द आईबीसी कमिटी जीपा के हैं आर के गोयल साहब. ही इज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड एक्स बैंकर. आई लाइक हिम टू स्पीक अबाउट द इशू. Thank you, Madam Anuradha ji. Thank you, and good evening to everyone, and particular the JIPA chairman Praveen ji, those who have all come to that stage of that, and what I have seen, the Nipun ji is also there, and I think Hansraj ji, I think somewhere we have been connected, if not. And thank you for inviting me. So without wasting, and my against the deepest condolence to the Makita sir, whose mother has passed just now. So going forward, recently I was in a committee of the IIIA, in which the Haldia sir and Madan sir was also there, and some other were also there, discussing about this, how best improvements we can do. Right? Though since the inspection, since the born of the IBC, there are lot many amendments based on the experiences, and all of that come in force. But still there needs to be a great great changes just to make it a vigorous instrument for resolution of the bad debts. So going forward, I always say that a bad sanction will be a good. As a banker, I always just was quoting my quotes amongst the different branch sets of the group of 200, 300, 400, even the 500 branches, the group. Just I was quoting a quote: bad sanction can be a good, and good sanction can be bad, will be bad. Mean sanction बहुत अच्छी तरह से हुआ, sanction is not, sanction is done by some upper level authority, but monitoring is very important. And see that when the account turns NPA, the promoters knows all the things. By that time, he just 2 साल पहले का उसका देख लीजिए एनपीए होने के बाद. बैंकर्स आर इंटरेस्टेड कि एनपीए से बचा रहे, 100 रुपए जमा कराए, 1000 रुपए जमा कराए, उसको जस्ट बुक्स में एनपीए नहीं हुआ. Meanwhile, the promoters or the whatever they say, they just are involved how to just जब डूब रहा है तो जहाज को कैसे अच्छी तरह डुबोया जाए. This is my clear concept that I shared in the IBC, in the triple IP meeting also. So though this IBC and the Honorable Supreme Court has given the supreme power to the COC, and it always frees the COC from their accountability, their ownership, and their liability. No accountability if any resolution is passed, no accountability if any liquidation is passed. But something has to be viewed on the part of the COC. What are the reasons of the failure? Whether prior to the NPA, 3 years, the stock statement were being checked, whether the book debts were being checked. These are the matter of concern. Stock audit, just a formality. Thappa lag gaya. And certainly, it should be the accountability of the person concerned was done. Whether the inspection of audit or the audit of the accounts or the stock audit or the debtors audit. So what I've seen in lot many cases, when the accounts become NPA,
it takes 2 to 3 years from banks to file the to go to the IBC and like that. And by that time, the company finishes. And you look back for the 2 years balance sheet prior to that of the NPA, the entire thing will be clear. I'll just come to a quick knowledge where the prior to 2 years, a company has diverted his hard-worked money into the fake bills, 206 crores, hard money by way of RTGS, sending the RTGS and converting into the fake bills. So this is a serious concern. So there was 2-3 points in my that meeting that at triple IP. See, at that time, the bankers take a judicial decision whether to finance or to finance, and based on the securities and all that. All of a sudden, some private entity or some the MBC enters into that and it finances without any security. And you must have seen that in COC, it gets 100% voting rights. It gets 100% voting right. So I raised one issue that the unsecured financial creditors should not be treated at par with the secured financial creditors. See, when we have financed to a certain unit, bankers must have taken into consideration how we can treat the unsecured creditors at par with the secured creditors to be at par in the COC with 100% voting rights. So this was my first session. See, they have entered. What was the need? We cannot treat them at par with the 100% participation in the voting rights or in the COC. The voting rights, no doubt that the whatever the distribution is there, but the voting rights should be limited to the 50%. Well, should we make half? And secondly, the ethical working, certainly, I will say the ethical working, the IBC, IBBI, IIP, see, all they talks about the ethical working of the insolvency professionals. They do not talk insolvency, the ethical working about the counsels engaged in this profession. So every stakeholders, every person should involved in this profession. Their ethical working, their ownership, their accountability should be monitored. Not only the insolvency professionals. Insolvency professionals के तो ऊपर आपने इतने बैठा दिए कि बस बहुत वो है. And thirdly, as rightly I pointed out, the COC has given the vital powers, but it doesn't mean that they are not accountable. Thanks to the IBC, that they have not made the banks accountable. Even the banks are not utilizing this platform to resolve the bad debts. The reason is that non-transparency. Non-transparency in selection of the IPS, for which there is my concern. There must be a transparency in selection of the IPS. Just I wrote. नाशपाती तो रखी है प्लेट में भाई. नहीं तो ये तो बोले हम खा चुके हैं. श्रेयांश ने नाशपाती. Hello, am I audible, please? Kindly mute yourself. Hello, am I audible, please? Am I Yes, audible, sir, please? loud and clear. Well, sir, you are loud and clear. So just I will finish my if time does not permit, I will finish shortly. So this see the transparency in the selection of the insolvency professionals and liquidator. Until now, I asked them, when you have posed the number of assignments of the 10, why you are not implemented? Why you are not implementing it? It means these are in the meeting itself. It means these are protecting the CF fraternity. I just told them, because the banking fraternity in this profession is very much less than 5%. So see, my role is this system should improve. System should work automatically. See, when I sent one code and when I was not being selected in a bank, I just send a mail, just endorse the copy. Sir, can you advise me the fate of this by EOI, जो मैंने expression of interest दिया था, and I just mark the copy to the CVO. I got lot many calls. Sir, CVO को आपने, so when
I have just asked why I could not find my place. I have just asked. So friends, we have to be tough. If we are honest in our working, we are accountable in working. If we are ethical in working, we have to be very tough in resolution of the bad debts. Might be the promoter, might be the else. Thank you. This was my submission, and certainly with our all efforts, the things will improve over a period of time. Thank you, and thank you, Praveen ji, for inviting me to this platform. थैंक यू गोयल साहब, आपकी दो बातें बहुत अच्छी लगी कि इनिशियल लेवल पे जब स्टॉक स्टेटमेंट्स और बुक डेट्स चेक किए जाते हैं तो उसको बड़ी रिलीजियसली चेक करना चाहिए। ये नहीं कि 12 महीने की स्टॉक स्टेटमेंट वहां पे आ गई, ऑन द स्पॉट भर गई, और हमें 2-3 साल में जब एनपी हो रहा है तो नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। इट शुड बी एट दैट स्टेज दैट इट शुड बी चेक्ड, एंड थैंक यू सो मच। एक आपका मेरे को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि एथिकल वर्किंग सिर्फ आईपीएस की नहीं होनी चाहिए, द ओनरशिप शुड बी एंड अकाउंटेबिलिटी और शुड बी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन, एंड हमारा आज का द बर्निंग टॉपिक ऑफ टुडे इज प्रोटेक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऑफ IBBI। जैसे कि वी ऑल नो, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट there is a disciplinary proceeding against an IP now and then. Yes, The madam, reason being, madam, एक मिनट, I just want to intervene. मैं इसमें भी मेरी बात हुआ था ट्रिपल आई से। I just told them कि disciplinary proceedings, even issuance of a letter, just they demoralize the passion of the insolvency professional. So even letter should be split in the true spirit, not like that कि एक complaint आ गई. It should be very well judged. His past record should be judged. I raised this question in the triple I that the committee member who is just coming with the new resolutions. So I raised this question. Actually, this is ये क्या है कि उसका जो motivation है, it demotivates him. Thank you. Just sorry for interruption. Right, Goel साहब, even I feel that way कि किसी को जरा सी प्रॉब्लम है और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर राइटली वर्क कर रहा है तो देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स जिनको प्रॉब्लम रहती है। जस्ट पब्लिश अ कंप्लेंट विद द IBBI और ट्रिपल IPA, 2,500 रुपए लगेंगे, कंप्लेंट डाल दी, एंड देन ही इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट, लेट्स हियर अबाउट दिस टॉपिक from our own Nipun Singhvi ji. Nipun Singhvi ji, let me tell you a few lines about Nipun Singhvi ji. He is a CA, CS, LLB, LLM corporate law, certified forensic, IFRS bank auditor, qualified independent director, and have been a member of the World Bank Insolvency Group on Train the Trainers, jointly with IBBI and IPAs. So let's hear from his mouth what he wants to tell us about this topic, how the insolvency professionals can create a safety net around themselves while working in an ethical way. Thank you, Anuradha ji. Thank you, Praveen ji, again for choosing this wonderful topic. We had one round of discussion on it. Now today is the second round. And though Ashish ji is not with us, but I will try to take all those points what Ashish ji wanted to mention. And also I would like to introduce Mr. Sunil Kumar Agarwal. He is with us, and he is also a very renowned insolvency professional, handled various assignments. He was overseas for I think almost 2.5 decades, and wonderful experience of handling good cases and resolution plans worth more than I think 3,000 crores he has handled. And why I have invited him here, and his experience is important because there was a show cause, then there was an order against him by the IBBI DC, though we have approached Gujarat High Court, got a stay. But I just want you all to listen from the horse's mouth what is actually happening, what is the experience, and why some of the issues which could be resolved at the level of IBBI, they are not being resolved, and why these are going into these such hefty penalties, or something like some people are also getting suspended. So those all things we will discuss. But I request you, Sunil ji,
to share your experience. And good, sir, Manoj ji is also here. Manoj sir. So, Namaskar. namaste, sir. Very nice to see you here, sir. Yes. I'm honored to be with you also. Sir. So, Sunil ji, I would request you to share your experience of this particular matter. Though the matter is sub judice, but still I want your experience so that other IPs also get enriched that what all precautions they should take and sometimes what all things we should document. Sir, please. Sunilji, you are mute. Kindly unmute yourself. Thank you very much, Nipun Saab. And I also thank the JIPA office bearers to basically come out with webinar with burning issue of recently DC orders. I will straight come to the point and my feelings about as to how as a victim I feel after having spent 36 years of corporate experience, not only in India, not only in 1 or 2 states of Republic of India, but I think 75% of the India I have seen in my during my work, and also at least 20 countries that I have visited and worked for at least 2-3 foreign countries as well. I felt recently as an IP, as we all are aware that this is an area wherein the skills required are not in of 1 or 2 streams, but you have to be basically not only jack of everything, but very near master of everything. And yet, while you do and apply those tools, those skills into resolving the company, teaching the lessons to those who have been taking this country for a ride, bypassing, finding loopholes in every law and regulation and getting away with their wrongdoings. We are the ones, I was the one who nailed them. And to my knowledge, I think it was the first or second order under PUF transactions section 4366, wherein for the first time, Honorable NCLT Gujarat ordered to reverse the transaction which CD had entered. This is not only one, there are many other firsts which with the hard work, daring and the experience utilizing and cracking the successful resolution I applied. But at the end, I felt cheated. By whom? Our own, I can say, the mentors. As somebody said just now, the moment the SCN is issued, you are awarded the punishment. And what punishment? Like in the life of a person, when you kill somebody, it is called murder. And in the professional world, if you stop him doing his professional job, it is very similar. The one fine morning you get up, in your mailbox you get a SCN and you can't do anything. I realized as to how this kind of treatment can be given to somebody
who has not even replied to his defense against the allegations made in SCM, and you give him the highest punishment. I have not seen any such treatment or punishment given in any law as far as my knowledge goes. Now, cutting the long matter short, my experience and my basically input to the system could be that we will have to basically see who are those people who are auditing and vouching what you have done during the process of handling of your particular CIRP or liquidation matter. Unless I wonder, unless and until somebody who has done at least 5 successful resolutions and liquidations until dissolution, how he can be justifying commenting on the job of Ibbi? Now you see, someone who is the part of IA, inspection agency, the two gentlemen, what are their qualifications and what are their experiences? And if they are not adequate, how they will realize the challenges in practice might have been faced by a person against whom you are doing inspection. So this is highly objectionable in my opinion. Second thing, what I realized over a period of last about 3 months, there seems to be no consistency in the orders. One contravention you make out, you give X amount of punishment or X judgment. The similar contravention you find with some other IA, other IP. You are very lenient or you are very tough. So the scale at which you measure is not the same. In my opinion, while the code is in infancy stage, we need rather a hand holding than a stick in the hands of everyone. I will not name everyone. Everyone is after your blood. Let there be any stakeholder. They are all after your blood. The moment you are appointed IRP, RB liquidator, they want you to work the way they are benefited. And it has become a fashion. It is really a fashion that at least 2 to 3 people, 2 to 3 different stakeholders will make a complaint against you with IBPI in every matter. And it has become a very, what should I say? हिंदी में बोलते हैं तकिया कलाम. अगर उनको आईपी को कुछ थोड़ा डांटना होता है ना, या कुछ मैसेज देना होता है कड़वा, तो केवल एक ही बात बोल देते हैं, वो मैटर कुछ भी हो, बोले आपकी कंप्लेन हम आईबीआई में करेंगे. उसको तकिया कलाम की तरह से मैं तो हफ्ते में 3-4 बार सुनता रहता हूं, और कुछ लोग चले भी जाते हैं. एंड दे आर राइट. Actually, they are right.
कि उनको पता है कि द मोमेंट आई विल गिव वन कंप्लेन अगेंस्ट दिस मैन, आउट ऑफ 8 hours और 10 hours इन ए डे, 4 hours पर डे वो उसी में बिजी हो जाएगा। तो जब उसी में बिजी हो जाएगा तो मेरे को कहां से इन्वेस्टिगेट और नेल करने के लिए टाइम बचेगा उसके पास। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंटली यूजिंग दिस बिकॉज दे नो कि इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कोई है ही नहीं। इनका जो अपना गार्जियन है वही उनको नालायक समझता है। अब बिना प्राइमा फेसी ये जाने कि यार हो सकता है ये नटखट बच्चा है, गलती एक बार ना भी की हो उसने, तब भी वो मान लेता है कि हाँ गलती इसी की है। पहले सबसे पहले मान लेता है गलती इसी की है और उसको बिजी कर देता है। तो ये मेरे ख्याल से अगर हमको, जैसे हम लोग बातें तो बहुत करते हैं कि आईबीसी का इंटेंट ये वो फलाना स्टेक होल्डर, 4 पिलर 3 पिलर्स, अरे पिलर को तो आप हिला रहे हो यार, उसका बेस ही हटा दे रहे हो पिलर का, तो स्ट्रक्चर खड़ा कैसे रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर को हिलाने का काम हो रहा है उससे एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो ऐसा घुस गया है पिछले 2-3 महीने से, डेली सपना आता है मेरे को, यार तुमने कुछ जरूर पाप किए होंगे पिछले जन्म में कि तुम इसमें आए, क्योंकि अदरवाइज तो अच्छा काम करके आपको कोई फिर पूरे दिन कर्ज करता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे आप कुक कर रहे हो, रेसिपी में अच्छी चीज भी डाल रहे हो मीठा, बन रहा है कड़वा, तो कोई ना कोई पाप का ही असर होगा। ऐसा भी आता है मेरे को कभी कभी। खैर, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं जरूर, लेकिन इतना हिम्मत हारने वाला भी नहीं हूं बहुत जल्दी। लेकिन अब चूंकि निपुण भाई ने मेरे को ये मौका दे दिया तो अंदर से नेचुरली निकल रहा है ये सारा, तो उसको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये पूरे पिलर को हिलाने की बजाय हिलाने वालों को ये देखना चाहिए कि कंट्रावेंशन किस नेचर का है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एज ए प्रोफेशनल we must have the highest degree of honesty. Not only honesty, daring, and the skill to separate right and wrong, and should be judgmental to take a reasonable, correct judgment. And intention should not be nullified. If these things are compromised, yes, that guy should not be spared, in my opinion. However, if the so-called contravention, if so-called contravention is the nature of error or mistake, or due to a certain limitation, because only we know as IP when we go in the field. आप देखेंगे, मैंने दुनिया में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं देखा सर कि जहां पर बंदा कोर्ट में भी जा रहा है, क्लाइंट के ऑफिस में भी जा रहा है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ESI, हु नॉट, पुलिस, और भी आजकल बहुत चल रहा है। बंदा कहां कहां नहीं जा रहा है। कौन सा प्रोफेशन है कि आपने इतनी सारे उसको दे दिए और बिना हाथ के, बिना हथियार के, 2 ही हाथ हैं, हथियार कोई नहीं है आपके पास, लड़ने को आपको छोड़ दिया है बाहर, अब पूरा विजय हासिल करके आओ। आप करके भी आ गए, फिर भी आपसे पूछ रहे हैं अरे आपने तो एक आदमी ज्यादा मार दिया वहां पे। तो मेरे ख्याल से इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। मैं चुक साहब को सुनना था अभी पहले, हमारे IIIP के बोर्ड में भी हैं साहब। मेरे ख्याल से मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है उसको आगे तक पहुंचाएंगे, लेकिन IIIP को मैंने मदद मांगी, मेरा फोन भी नहीं उठाया।
कभी कभी अभी मैंने इनकम टैक्स में सब कई सालों से, मैं तो खैर जिंदगी में इनकम टैक्स ज्यादा दिया भी नहीं, मैं एनआरआई था, 2 साल से देने लगा हूँ, 2-3 साल से। मुझको तो इनकम टैक्स वाले ज्यादा अच्छे लगे। वो टाइम से रिटर्न भर दो, अच्छा काम कर दो, टैक्स दे दो, तो एक लेटर आता है वहां से साहब। जिस दिन वो लेटर आया उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी वैसे तो, लेकिन मुझको पूरा दिन बड़ी खुशी सी रही। यार कम से कम हमारे अच्छे बर्ताव को, अच्छा काम किया, कंट्रीब्यूट किया, कुछ तो कोई देख रहा है। अरे तो साहब इतने केस हमने रिजॉल्व किए, इतने इतने लोगों से झगड़ा किया, रिजोल्यूशन तक पहुंचाया, प्रोडक्शन दोबारा चालू करवा दिया, 800 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। एक 2 लाइन का लेटर ही लिखते थे हमको भी, तब हमको भी लगता कि साहब हम आपके पिलर हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, हमको कितना अच्छा लगता है और आपके क्या जाता। तो वो सब भी थोड़ा जो मोरल बूस्टिंग का एक जो टूल्स होते हैं, मेरे ख्याल से उसकी बहुत आवश्यकता है, ताकि हमको भी लगे कि यार ये थैंकलेस जॉब नहीं है, कोई देखता है थोड़ा बहुत। ऐसे कई काम भी किए हैं साहब हमने भी। अच्छा, पेपर वालों को तो पता लग जाता है। मुझको बड़ा ऐतराज इस बात का भी है, पेपर में तो कितने बार अपना फोटो भी आ गया है, न्यूज भी आ गई है, उनको कहां से पता लग जाता है। और यहां हमको एक वर्ड ऑफ सिग्नल, वर्ड एप्रिसिएशन नहीं मिलता आज तक। तो ये सर मेरा एक मन की बात है ये। आज संडे नहीं है, सैटरडे है, तो मेरे मन की बात है ये। एक और सर लास्ट, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए थे, अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग भी बोलोगे कि यार ये तो ज्यादा हो रहा है अभी। एक लास्ट पॉइंट मैं और बोल दूं, यार ये कौन सा कानून है, किस देश का कानून है? हमारा आईपीसी में हम कितना सुनते हैं, आप सब लोग भी सुनते होंगे, लिमिटेशन। कोई भी आप अपना जो दर्द है, जो भी पिटीशन है, एक कोई मैटर को 3 साल से पुराने मैटर को आप नहीं उठा सकते। लिमिटेशन एक्ट मेरे ख्याल से यही बोल रहा है। मेरी नॉलेज हालांकि हिंदुस्तान की कम है, मैं 4-5 साल पहले ही वापस आया हूं 22 साल के बाद, फिर भी इतना तो मैं समझता हूं। 2017 में आपने कोई मैटर किया, कोई मीटिंग की, उसमें आपसे थोड़ी बहुत कुछ हो गई होगी भूल, रास्ते पे भी आप देखते हैं तो लाइन बनी रहती है, लेन ड्राइविंग होती है सर, लेन ड्राइविंग। आप वो लेन से थोड़ा सा कभी भटक गए 2017 में, एरर हो गई आपसे, या 2018 में, 2022 में उसको एससीएन देके आप कहोगे आप काम नहीं कर सकते? तो भाई आपने ऐसे आदमी को क्यों छोड़ा सड़क पे 4 साल के लिए गुनाह करने को? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। अगर व्यक्ति ने इतना बड़ा कंट्रावेंशन कर दिया और वो इतना बड़ा गुनहगार था कि वो इस लायक नहीं रह गया कि उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो 4 साल क्यों छोड़ दिया था उसको? 4 साल में तो उसने बहुत लोगों को मार दिया होगा। तो सर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, और बहुत स्पीकर्स हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, Sunil ji. With your humongous experience, I feel from your words, लेकिन आपके दिल के दर्द निकल के आ रहे हैं, और आप राइटली कह रहे हैं कि इतना ज्यादा काम करना, मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यू आर सपोज टू डू एवरी पोस्ट एंड पिलर, जाके काम करना, और लेकिन उसके बाद विदाउट एप्रिसिएशन कोई छोटी भूल या इनसिग्निफिकेंट भूल या मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी लगाना चाहिए हर भूल पे, बिना उसको देखे हर लॉ को इस तरह से देखना, मतलब। और उसमें मैं भी ये सोचती हूँ कि इसमें कुछ एवोल्यूशन आना चाहिए, कुछ सही होना चाहिए इसके, ताकि पेरेंट्स हैंड होल्डिंग करें, rather than brick batting, they should hand hold the things. Thank you, Sunil ji. Now I'll shift the dais to Nipun ji.
Thank you, Anuradha ji, and thank you, Sunil ji, for sharing your experience. मैं इसीलिए चाह रहा था कि सुनील जी अपना experience share करें, because this is what is actually happening with IPs. And I think Jeepa, Manoj ji, everybody is here. We should know कि what is the problem at the root level. Because अगर इसी तरीके से brick batting होती रही या strictness रही, so that day is not far, it will again get concentrated only in few big IPEs. Again, it will go back to the same thing what we are seeing in maybe chartered accountant profession or company secretary profession. Very few hands, very few firms controlling the complete profession. So that is something जो नहीं होना चाहिए. And there are, as rightly said, Sunil ji ने जो बोला कि there are disciplinary cases, and we read disciplinary cases to understand what is the best practice to do a particular thing. But there is no consistency in the orders. Sometimes they say this is black, sometimes they say this is white, sometimes they say this is gray. We don't know what is the shade. We don't know what is the best practice. तो कुछ एनालिसिस मैंने किया है, एंड आई थिंक अनुराधा जी क्या मुझे को होस्ट करेंगी? आई कैन शेयर द स्क्रीन. शेयरिंग राइट्स देनी है सर आपको? यस मैम. आई थिंक आपके पास और रश्मि जी के पास है. परवीन जी, निपुण जी को प्लीज आपको होस्ट बना दीजिए ना. परवीन जी बना पाएंगे? Just a minute. Share screen. इसमें बहुत बुरी हालत होकर रखे और हम सब मतलब एक एक काम करने में भी अभी डरते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए जिससे हम सेफ हो सके. राइट रश्मि जी, मेरे को ऐसा लगता है ड्रॉप ऑफ अ हैट लगता है कि ये सही है या गलत है. 2 लोगों की राय 3 लोगों की लेते हैं तो उसमें भी 3 लोगों की 3 डिफरेंट राय होती है. Yes sir. Okay. Visual your screen. Yes sir. It is visible. Yes sir. तो ये कुछ मैंने ट्रेंड निकाला है अकॉर्डिंग टू ऑलमोस्ट 3 weeks 4 weeks बैक. अभी 4 weeks के अप्रोक्सीमेटली जजमेंट्स नहीं लिए, बट दिस इज हाउ द ट्रेंड फ्रॉम IBBI इज चेंजिंग. आप देखिए 2021 में टोटल नंबर ऑफ केसेस वर अराउंड 20. 2022 में वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर and the cases has gone up from 20 to 31. Suspension, out of let's say 20 cases, there were 8 cases of suspension. Now there are 12 cases of suspension, 2 cases of termination. When I am saying termination means completely banned. Warning in 7 cases, penalty in 4 cases. And when I am analyzing कि ऐसा क्यों हो रहा है, what are the violations, as to the best of my ability I am not able to differentiate कि इसमें ऐसा क्यों हुआ है. Maybe I am not knowing the complete facts of that particular case, पर जितना order में लिखा है, from the order I don't think so we can make out कि what is the reason for this particular warning or penalty or termination on the same issue. अगर कोई गलती हो जाती है, as सुनील जी said, there could be an error, there could be a mistake, and there could be an offense. Penalize आप किसी को तब करते हो. देख रहे थे ना ये, देख लो क्या कर रहे हैं. अनुराधा जी अब आई थिंक म्यूट करेंगे आप. ओके. So my view is that the strictness from the regulator has increased. If we analyze this particular data, that is what my view is. अब हम थोड़ा सा इसको सस्पेंशन को भी एनालाइज करते हैं. What they are doing, if you see in 2022, 1 to 6 months,
there is not a single suspension. All the suspensions are more than 1 year, 2 year, 3 year. So this is how they are saying a person should not be suspended for 1 to 6 months. That is what they are saying. I am not able to understand कि 21 में जो ऑर्डर्स हैं वो लिबरल है या 22 में ऑर्डर स्ट्रिक्टर है या वायलेशंस इतने सीरियस हो गए हैं कि दे आर बीइंग सस्पेंडेड फॉर मोर देन अ ईयर. एक दूसरा व्यू पॉइंट जो प्रोबेबली बाकी पार्टिसिपेंट्स में से अगर कोई लॉयर है तो ही वुड एग्री विद मी. व्हाट दे आर सेइंग, लास्ट ईयर अगर किसी के पास एएफए नहीं था तो व्हाट दे वर सेइंग कि अगर आपकी आईपीए ने पेनलाइज कर दिया है, लेट्स से आपको 10,000 की पेनल्टी कर दी है, तो आईबीबीआई विल से बिकॉज आपको आईपीए ने पेनलाइज कर दिया है, देयरफॉर वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. I don't understand the basic concept of our constitution is there should not be a double jeopardy. Same offense cannot be punished 2 times. Now under IBC, IBBI is also one regulator and IPA is also one regulator, or I would say sub-regulator. So for one offense, how both of them can prosecute me? That also I am unaware. Whether for same offense, can I be issued show cause by IPA as well as by IBBI? To the best of my understanding, I am not able to get under the law. They both are having power. Under the law, they both are taking adjudication. And interestingly, if you read orders of IBBI, what is happening? The orders are being shared with IPA. अब just out of curiosity, मैंने कुछ रिसर्च करी नॉर्मल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं उस पे, that when there is a disciplinary action, it is because of maybe one of the complaints, maybe by income tax department, maybe by CAG, maybe by RBI. There are various complaints before the institute which ultimately are decided with a warning, with a penalty, or with the removal of name. Broadly speaking, this is what happens. We have a right to challenge that order under ICI Act also. We can also, if there is a serious removal, that is maybe lifetime or so, then it has to be confirmed from the High Court. That is what broadly the law is. Now, even under the institute mechanism, there are layers. There is a layer of disciplinary directorate, there is a layer of disciplinary committee, then there is a layer of counsel. Depending on the offense, schedule 1, schedule 2, all these things are there. लेकिन जब हम IBC देखते हैं, so what is happening? There is only one regulator and he is the only person who is deciding the issue. There is no layering concept. There is no concept of appeal only. So if tomorrow, let's say regulator decides something, I do not have right to appeal. So my fundamental right to appeal against a particular order is gone. You cannot appeal before NCLT, you cannot appeal before NCLT. What you can do is you can only take the matter before a High Court or Supreme Court under your writ jurisdiction. Now, the tricky part is when you go under writ jurisdiction, I don't think so that High Court or Supreme Court is so much equipped to get into the facts of that case. So practically speaking, facts of a particular case, last fact finding authority ही वो है जो आपको adjudicate करने वाली है. So that is something which is incorrect. Though Insolvency Law Committee report जो recently आई है, as early as May, it says कि they are going to give a provision in the IB code to make appeals of the IBBI order before NCLAT. But as of now, when we are discussing today, there is no appeal. So that is one thing which according to me is very tricky, and therefore we have to be very cautious. My suggestion to all the fellow professionals is whenever you get any order of NCLT which has some observations, some remarks against you, directly or indirectly, immediately take it up before appellate court and try to get those remarks deleted.
Because if you do not do so, I have seen cases, I will not name each and every case, but I am handling cases where after 2 years, 3 years, IBBI is issuing show cause notices, taking that particular comment or remark by the adjudicating authority and saying, because authority meant this, therefore we are taking action against you. So that is one thing which is very dangerous. I have seen cases where a person was an IRP for just 2 months and he is now getting show cause notice after almost 3 years. So even for an act of IRP, which ultimately is of not much importance because technically the process is carried over by RP. Technically the company may be either resolved or in liquidation. Much water has flown. So there is no corrective action also. Now, after 2 years, suppose there is an order of NCLT against me, let's say in 2017. If IBBI had given me a notice or had questioned my wisdom that this is not correct, I could have taken corrective measure and appealed against that order. I could have gone before NCLAT. I could have gone before Supreme Court. But today the problem is that after 2 years, I don't have that remedy also. So basically, I am remediless. Like, for example, one of the case, what happened? NCLT made an observation against RP that RP accepted some claim as a financial creditor. Now, NCLT at the end decided that he was not a financial creditor. He was, let's say, operational creditor. So he should not form part of COC. And the promoter and the original petitioner settled the matter and matter was withdrawn. After 2 years, IBBI issues a show cause on the observation made by NCLT that he was not an FC and you considered him as an FC. Therefore, you should have been vigilant in verification of claim. On this basis, notice is issued. So technically speaking, that order of NCLT, which I could have challenged in NCLAT and said that this observation is wrong, because there will always be an error of judgment. I can always estimate something wrongly. I can see the balance sheet as a chartered accountant. What I can do, I will see, yes, this could be a financial creditor. This could be an operational creditor. And we all know when home buyer issue came in 2017, even IBBI was not clear about where to classify home buyer. If you remember at that point of time, there was no Form F. Some judgments said home buyer is operational. Some judgments said home buyer is financial. Some judgments said it is nowhere. And at that point of time, because of JP, IBBI issued a new Form F, residuary form, saying that if somebody is not FC or OC, he could be another creditor also. Subsequently, by an ordinance in 2018, when this JP matter went to Supreme Court, it was clarified by way of an amendment that if you are an allottee under error, you will become an FC. So my point is, law is changing, law is evolving, and I will also say it is revolving. Today, my wife may be my wife. Tomorrow, my wife may not be my wife. That is how the law is changing. Today, a promoter is qualified. He is eligible. Tomorrow, he is disqualified. Day after tomorrow, he becomes eligible. Section 10, insolvency petition filed. November 17, that promoter became disqualified because he could not give plan because of 29A. Company went under liquidation, but MSME amendment came and now company is MSME, so he is again qualified. So he may be disqualified to give a plan, but now he is qualified to give a scheme of arrangement. So that is how my view is, law is keep on changing. And today there is no fixed law. We all know that. Every day some new judgments are coming. Every day the settled position of law is disturbed, maybe by higher forum or by an amendment in the law. So my view is that we have to be very vigilant and please document something. Now I have also started advising all the IPs. Suppose today you are relying on some judgment and categorizing whatever. It could be a claim, it could be calling of COC, it could be providing some document to promoter, all those things. Kindly document it if you are working on some opinion, if you are relying on some judgment, because tomorrow we don't know
somebody will ask us after 1 year or 2 years, how did you do this? So at least there should be some justification. And whenever there is a doubt, whenever there is a slightest doubt, please move an appropriate application before NCLT. Don't worry. NCLT at the best will say, we will not adjudicate this issue. They will say, why you are coming to us? Why you are disturbing our time? No problem. It is better to get some accusation from NCLT than getting a negative remark and a show cause from the regulator, because the law today is once you get the show cause, your AFA gets automatically suspended. So you are basically declared criminal right from the date you are getting the show cause. You will not be able to accept any assignments. And the law also, as per the circular of regulator, law also says you have to declare with your name, registration number, whether your AFA is valid or not. So if your AFA is suspended, in your call communication, you will have to write it is suspended. And once it is suspended and you are communicating it to all the stakeholders, as Agarwalji was also saying, many of the stakeholders will get a point to make a complaint, will make this particular accusation of show cause a ground to remove or replace the RP. So my suggestion to you all is, whenever there is something, some issue, some legal issue, some interpretation issue, kindly document it to the best of your ability. Please get a legal opinion or move an application to NCLT. Don't take a call yourself or don't interpret something on your own, because this might prove to be fatal. Like today, I was in another conference in the morning. Issue which came before me was that RP accepted some claim as an FC, admitted a particular claimant in the COC. Subsequent to that, he came to know that the affidavits which is given by the claimant as an FC were false or fabricated. He came to know, he verified from the books of account, because normally what happens, to form a COC, we provisionally admit claim. We have 14 days cutoff. After first COC, he came to know. Now he wants to de-recognize that person as an FC. Or let's say his claim was 1,000 rupees. Now he wants to de-recognize it to 500, 400, reduce the amount of claim, because it is based on some wrong documentation as per whatever has come to his knowledge. Now, you cannot reduce somebody's claim in the COC just like that. You will have to move to NCLT to say that I am de-recognizing this particular thing. First, you have to inform that person, sort some explanation, clarification, and then move an NCLT for reconstitution of COC. Now, why I am saying so, you will say there is no law. Correct, there is no law, but there is a judgment. So the judgment name is Krishna Nitware. What had happened, NCLT has taken a view that if you are de-recognizing a financial creditor from COC, you are impacting the rights of that particular claimant. So therefore, RP should move an application to NCLT and should not rely on any other evidence which he is having. He has to be put before NCLT and let NCLT decide. Now you will say, what will happen practically for the COCs? Sir, subject to the outcome of the NCLT. Always document it like this. So this is again my suggestion, because this is all the learnings which I am also collating from all the IPs, how this should be done. Now I am sharing you the process, how it happens. So this is how the process runs. Normally, notice for inspection is received normally. In one of the cases, I am also seeing notice of investigation, but I will come on to investigation in a while. Normally, notice comes. They ask for some clarification. We give some clarification. Then they share the draft inspection report. On draft inspection report, we give a reply or our suggestions to the board, but we do not get a copy of the final report. This is something which Ashish ji pointed out when we were discussing one of the matters we are doing together, that the final report which is written in the regulation, inspection regulation,
is never shared with the IPs. It is directly shared with the board. Now here the board means one of the member who must be delegated the power of board under inspection and investigation regulation. So that is not known to us. But this is a point which is an issue which we have raised in writ petitions also. Ashish ji has also raised similar issue before I think Delhi High Court. Now, after seeing the report, the final report, board takes a view whether this particular report requires further action by way of show cause notice or not. Now, there is no time limit prescribed technically in the law. What should be the gap between draft inspection report, final report, and show cause notice? And therefore, practically what is happening, even if I have replied 2 years back, 1.5 years back, 1 year back, show cause notices are coming now. So this is something, obviously it will be decided by court, but this is the process where this particular thing is kept opaque. And I would request Manoj ji, Praveen ji to take up this issue with Chuk ji and our IPA, so that at least board understands that whatever final report is coming after our suggestions or reply, we at least get a copy of it. We are saying give principle of natural justice to claimant, to COC. We ourselves are not getting principle of natural justice. We are not privy to the report in which there are some allegations of contravention against us. So this is one of the issue which is there. After show cause notice, as I've already told you, circular of 2018 of IBBI says that after show cause notice is issued, your AF automatically gets suspended. You cannot take any assignment till your show cause notice is finally adjudicated. So that is what the law says. Normally we give a reply. And if we do not ask for a hearing, a personal hearing, now personal hearing means does not mean physical hearing. Normally now board is also giving video conferencing only. VC hearing they are giving. But it will only be given if you ask for that. So while replying to a show cause notice, please ask for a personal hearing. Because there is always a scope of explaining something in personal hearing. Though my experience is not very good in the personal hearing, but still, as a matter of right, we should always reply to show cause notice that we would request a personal hearing so that we can explain things further. And probably we will also understand what is in the mind of the disciplinary committee. Now see, here the board is taking a call to issue a show cause notice, but the matter will be heard before DC, disciplinary committee. Now, again, some of the legal issue with regard to disciplinary committee. Now, as of now, as per the IBBI website, there are 2 disciplinary committees, DC1 and DC2. So disciplinary committee 1 is being headed by the chairperson. Disciplinary committee 2 is right now headed by Mr. Whole-time member, Mr. Shukla. So there are as of now 2 disciplinary committees. Now I will like to tell you some of the point of law, which obviously I have challenged in writ petition also. But as a matter of right, we should know this. So you see, this is section 220. Now 220 is appointment of disciplinary committee, you can see. Now board will constitute a disciplinary committee to consider reports of investigative authority submitted under 2186. Now here this is very important. Provided that the members of the disciplinary committee shall consist of whole-time members of the board only. This is very important. What it says that the disciplinary committee should have whole-time members. Now, this was also one of the issues which we debated in conference of Manoj ji, AIPA, that whether disciplinary committee can constitute of one person or it has to be more than one person. So I solicit views of all the participants. What is your reading of this particular provision? Does it mean more than one or it means single? I think it should be more than one. It means more than one members.
सो सर आप सब बोल रहे हैं मोर देन वन होना चाहिए. Yes. सर कमेटी का मतलब ही होता है कि मोर देन वन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो बेसिकली कमिटी का मतलब ही यही होता है कि मोर देन वन. या मैं ऐसा बोलूं कि हमने मीटिंग करी और मीटिंग में कौन था? मैं था. किससे मीटिंग करी? खुद से करी. किसने डिसीजन लिया? खुद ने लिया. सो मीटिंग इज नॉट अ सिंगल पर्सन, देयर हैज टू बी मिनिमम 2 पर्सन. तो कमिटी में भी मिनिमम 2 लोग होने ही चाहिए. दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ literal meaning of committee is. So this is also one of the big issues which I have come across ki committee mein they have only put one member. If I can show you, I think just 1 minute, I will just open the structure of, yes, so sir, this is what IBBI website says for disciplinary committee. So sir, there is DC1 and DC2. अब सर थोड़ा सा मैं और हिस्टोरिकल जाता हूं. दो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट ही हूं पर मैं स्टिल हिस्ट्री में जा रहा हूं. मनोज जी, 15 जून को देयर वाज डीसी ऑफ 1 मेंबर. 17 अक्टूबर को 1 मेंबर. लेकिन अप्रैल 18 में 2 मेंबर्स. तो या तो अप्रैल 18 में जो कमिटी थी वो गलत है, या जो कमिटी अभी है वो गलत है. अगर मैं लॉ की बात करूं तो देयर हैज टू बी ए कंसिस्टेंसी. या तो कमिटी का मतलब 2 मेंबर होगा या कमिटी का मतलब सिंगल मेंबर होगा. सो दिस इज अगेन माय ऑब्जर्वेशन विद रिगार्ड टू कमिटी, दैट द कमिटी शुड बी एटलीस्ट हैव 2 मेंबर्स and it should be heard by 2 members. अब इंटरेस्टिंगली एक कॉन्ट्राडिक्शन है रेगुलेशन में और सेक्शन में. सो अभी मैं थोड़ा सा रेगुलेशन भी आपसे शेयर कर रहा हूं. सो दिस इज अवर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस. अब मैं इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशन में डीसी की डेफिनेशन में जा रहा हूं. डिसिप्लिनरी कमिटी मीन्स अ कमिटी ऑफ होल टाइम मेंबर ब्रैकेट S constituted by board under 220 subsection 1. तो हमने अभी 220 subsection 1 पढ़ा. Provided that the whole time member in the DC shall not be associated with investigation or inspection. So मनोज जी आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? सर आप म्यूटेड करता हूँ. सर आपके जो पॉइंट्स हैं दीज आर क्वाइट यूनिक एजुकेटिंग एट समथिंग वेरी गुड. अब प्लीज मैं तो एक बड़े ब्रॉडर सेंस में, मेरे को आप बाद में थोड़ा सा टाइम देना बिकॉज आई जस्ट केम ओवर. तो देन आई टेल यू मेरा तो बिल्कुल ही व्यू पॉइंट डिफरेंट है. यानी कि बेसिकली हो ये रहा है कि हम लोग कहते हैं ना हम लोग एक पिलर हैं और आईबीबीआई इज आल्सो अनदर पिलर. तो अगर आईबीबीआई को हमारा केयर करना चाहिए तो होल प्रोसेस नीड. अब देखिए हम अपनी, मेरे पास जैसे आप बात कर रहे हैं इस तरह के रेगुलर फोन्स आते रहते हैं. जिस बंदे के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी स्टार्ट होती है, ही मी और वन ऑफ माय गवर्निंग बॉडी मेंबर्स कॉल्स अप एंड सेज कि एसोसिएशन क्या कर रही है. आई एम टॉकिंग, आई एम टेकिंग यू अगेंस्ट द ट्रैक. तो अब मैं उस बात पे ज्यादा टाइम डिवोट करूंगा rather than on these technicalities because you are the master of these technicalities. Your opinion exceeds everybody's opinion. So you give your opinion and later on I shall share कि इसका solution क्या है. We need to be provide solution to our members कि इसका solution क्या है. तो ये as far as this मैं एक्चुअली आपसे सॉल्यूशन ही चाह रहा था सर. DC means, देखिए इसके अंदर मेरे 2 ऑब्जर्वेशन है. डिसिप्लिनरी कमेटी मींस अ कमिटी ऑफ फुल टाइम मेंबर्स constituted by board. Your question is repeat your question again, then I reply to the point. डिसिप्लिनरी कमिटी में होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए एंड रेगुलेशन बोल रही है होल टाइम मेंबर भी हो सकता है. सो वन कॉन्ट्राडिक्शन. सेकंड इज दे आर सेइंग डीसी के अंदर जो पर्सन है वो इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए सर. इसमें एक मेरा क्वेश्चन और भी है. आई एग्री विद यू, नहीं होना चाहिए. तो इट इज बेसिकली बैड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी. आई रिमेंबर व्हेन वी आर डूइंग इन दिस प्रैक्टिस, सीए प्रैक्टिस,
तो इसके अंदर टैक्सेशन की प्रैक्टिस जब हम करते थे तो इसके अंदर एक सेक्शन हमारा 148 आता है और 147 आता है, जिसके अंदर अगर डिफरेंट अमाउंट्स के लिए आपको एडिशनल कमिश्नर से या CIT से अप्रूवल लेनी पड़ती है. इफ अमाउंट इज 1 lakh below 1 lakh rupees, then you require DC permission, and if it is on the higher side, then you require this. If we see, if I and the ultimately courts have held that if you have got wrongly permission even from the higher authority, then that particular permission is bad in law. तो अगर हम इस चीज को करें तो हमारे जो प्रेजेंट चेयरमैन जो डिसिप्लिनरी कमेटी को हेड कर रहे हैं, विल दैट बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड? In my opinion, if we see the liberal interpretation of the law, यानी कि he has no right. Only the TM has the right to be part of the disciplinary committee. Please enlighten us, नुकुम जी, इसके ऊपर. सर वो वाला पॉइंट भी मैं अभी लेने वाला था, उसके लिए मैं 208 सेक्शन को पढ़ूंगा कि होल्ड मेंबर ही डीसी में हो सकते हैं. मैं पहले तो मैं डिस्टिंक्शन करना चाह रहा था. मेरा सॉल्यूशन ये है टू दिस कि inspection or investigation should be divorced from disciplinary committee. That is the main logic. Absolutely. I fully agree with you. Absolutely. So sir, we can ask IBBI in our reply whenever we are getting who is heading the inspection or investigation, who is a whole-time member, and who is going to adjudicate the same in DC, because the person should be different. So that is my first view, that the notice should clearly say who is going to head the disciplinary committee, who has issued a show cause notice. Because show cause notice is to be issued by the disciplinary committee, adjudicated by the disciplinary committee, and there should be no contradiction, no overlapping with inspection or investigative authority. So that is my view. और मनोज जी आपने तो ऑलरेडी बता ही दिया कि इनकम टैक्स में भी हम ऐसा ही करते हैं कि कौन अथॉरिटी है, वो वैलिड भी है या नहीं. अगर इनवैलिड है तो हम नोटिस को ही क्वेश्चन में लेके चले जाते हैं हाई कोर्ट में. वी इवन डू नॉट गो टू CIT अपील्स और ITAT. सो नोटिस बी बैड इन लॉ आउटराइटली प्रूव हो सकता है इफ दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर. अब मैं इंटरेस्टिंगली कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा. I have got cases, and when I check the IBBI website today, whole-time members in last maybe 1.5 months or 2 months have been appointed. Technically, there was only one whole-time member. 2 whole-time member और अभी appoint हुए. So that means what? There was only one whole-time member who was obviously involved in inspection and investigation, and he has only been heading the DC. अगर मैं broadly, blindly बाहर से बात करता हूँ, without going into the facts, outrightly भी this will be an issue before any court, that whether the DC being headed by some person, he is the same person who is also seeing inspection and investigation. ये भी बंद कर. Pradeep ji, can you mute your mic, please? Yeah. So this is one of the other point. Now, Manoj sir, what you were saying, that section also I will open. Sir, this is the point, sir, which you are referring. Board में कौन-कौन होगा? 1 chairperson, 3 members from central government, maybe Ministry of Finance, Corporate Affairs, Law, 1 member from RBI, and 5 other members to be nominated by central government, of whom at least 3 will be whole-time members. So technically speaking, 3 whole-time members will be there. And from those 3 whole-time members, according to my understanding, at least 2 should be in the disciplinary committee. And the person who is in disciplinary committee should not see inspection and investigation of the same IP. They should be divorced. They should be separate. They should be different. So these are some of the technical issues which, according to me, needs to be rectified as far as the infrastructure is concerned. And according to me, after whole-time member or the disciplinary committee decides something,
there should be a institutional appeal in the IBBI itself. Just like we have CIT appeal, just like we have any first appellate authority, let's say in RTI, there is a PIO and there is a first appellate authority. There should be a chance to appeal, to explain our point of view. And the one person or the one committee should not be held to be final as far as disciplinary committee actions are concerned. So these are some of the legal issues which I wanted to touch. Then I have told you some of the issues with regard to NCLT orders on which show cause notices are coming. So I have suggested you to move an appropriate appeal before appellate forum to delete the negative remarks, if at all given by NCLT. Another important issues which are coming up, and I suppose this we had discussed in another conference also, with respect to the monitoring committee. They have given in the order of Mahendra Khandelwal that the person was appointed as the monitoring professional of the monitoring committee, which was implementing the resolution plan. Now, the view taken by IBBI is the person who is an RP cannot accept the assignment for a period of 12 months after the process of resolution is over. And they have thought it to be a violation of clause 23A of Code of Conduct. Now, according to my understanding, and probably my other colleagues would agree, that it is a practice in the market that once a RP is there, a resolution plan comes. Normally, the RP is made member of the monitoring committee because he is aware about the company. Some cases I have seen other IPs are also made, or sometimes a professional is also kept in the meeting as a monitoring committee chairperson or to collate data. But most of the cases, what I have also handled, this has been a practice where the monitoring committee is being headed by the same RP. Though now that particular order has been stayed by Delhi High Court of Mr. Mahendra Khandelwal. But again, my view with respect to this issue is today, my suggestion to you all is, if suppose you are also heading some monitoring committee where the plan has been approved, let us not think that Delhi High Court has stayed, so every High Court will stay. Tomorrow, a violation show cause notice may come to you also. My suggestion to you is twofold. One is, please ask for a clarification to IBBI with respect to your matter, because you must have supplied the resolution plan approval copy to the IBBI. So please seek a clarification. Second, if they reply in negative, immediately step down by moving an application to NCLT that I cannot continue because of the new legal viewpoint taken by IBBI. Because see, today we are in a corrective position. Today, I am not telling you that, no, if something will come, we will see in the court. That's a different issue. But there has to be some corrective action at our end, if suppose this is the view taken by the regulator. Because stay is on a particular case and not the law point in general. So until that particular point becomes clear from the court, let us take a corrective action and move an appropriate application to get our name removed. Why I am saying you to seek a clarification? You can say, sir, why should not we directly move an application to NCLT? Because, sir, when you read the order, there is a catch in the order. They say that it is possible from the evidence given by the RP that when the plans were compared, this particular issue was not told to the COC, and COC therefore approved a plan in which RP was interested, had a vested interest, because the plan would be implemented by him and he will get an extra fee for that assignment, which is not part of the assignment as an RP. So there is a very narrow catch in this particular order also. Therefore, it is better to seek a clarification from IBBI. I know that sometimes IBBI may not revert also. Sometimes as a regulator, they will not reply also. But at least we should seek a clarification. And I would request Praveen ji and Manoj ji to make this particular issue clear through IPA that yes, this particular thing should be there or not, a RP should be part of monitoring committee or not, because in big cases, I will tell you my own example. I had been appearing in matter of SR Steel, which is considered to be a successful case study. There, Justice Mukhopadhyay,
when he was then the president of NCLAT, chairperson of NCLAT, he said that I want RP in the monitoring committee. And he was, by an order of the court, heading the monitoring committee. So point I am trying to make is today they are taking a view that we should not take up assignment. Fine. But if we have already taken up, what should be the corrective action? So this is my suggestion of corrective action. So, sir, I think I have compiled some cases of what is the violation and what IBBI has penalized on it. So that presentation I would share with you all. Pravinji, I think Gupta ji is there and we have very less time. So we should give... Yes, sir. Gupta, sir? Sir, I think you are on mute, sir. So I'd request you to come in, sir. Sir, after Thank you, Nipun Singhvi ji. But I would like to hear from Manoj Anand ji before I speak on Sir, thank you. Because yes, thank you, please. thank you very much. Thank you. Please, sir. I'll just take 10 minutes after you finish, please. Thank you very much. Sir, निपुण जी ने हमारे को एजुकेट करा. We are really thankful. And हम अपने प्रैक्टिकल काम के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और कितना हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, that only will time tell. But as far as my experience is concerned by handling जितनी मैंने 18-20 assignments handle करी आज की डेट तक, practically many times implementing things is very, very difficult. You know, even in our normal discussion, हम एक particular चीज का interpretation एक हाई कोर्ट डिफरेंट लेती है, दूसरी हाई कोर्ट डिफरेंट लेती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन सब चीजों को क्रैश कर देती है. और हम भी एक बहुत सारी ये इसके अंदर हैं डिस्कशन के अंदर बेनिफिट के लिए यूज करते हैं. यू नो, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. आई वोंट नेम दैट पर्टिकुलर केस. एक पर्टिकुलर आरपी एक पर्टिकुलर कोई काम कर रहा था, उसको अंडर कंपल्शन कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर वो पेमेंट नहीं करता तो यानी कि बिफोर मोरेटोरियम पीरियड तो प्लांट बंद हो जाता है. होल इंस्टीट्यूट, होल इंडस्ट्री यानी कि सिटी शुड हैव बीन एट अ ग्रेट लॉस. इस बेस पे उन्होंने ये आईबीबीआई ने उनको नोटिफिकेशन इशू कर दिया और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी और क्या कहते हैं उसको फॉल्ट ही भी क्लियर कर दिया कि आपने वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या है क्या नहीं है, आपने कैसे पेमेंट कर दी बिफोर मॉरेटोरियम पीरियड की उन पर्टिकुलर क्रेडिटर्स को. तो दिस इज व्हाट आई, बट अगर मैं भी इनकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता कि प्लांट को चलता रहे, जो हमारी बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न रहे, उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए विद इंटीमेशन टू द ऑल दिस थिंग्स देयर. चलिए, ये तो छोटी सी बात होगी. ये यू नो, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द आईफा, आई यूज्ड टू सी कंप्लेंट्स फ्रॉम मोस्ट ऑफ द आरपीज who get disciplinary proceedings. अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है. जब हम यू नो एज एन इंडिविजुअल इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं और एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन दे रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने ये जब हम लोगों ने पहले ये मीटिंग स्टार्ट करती है उसके अंदर हमने ये कहा था, वी नीड टू गेट यूनाइटेड. व्हाई आईबीबीआई इज एबल टू यू नो राइड ऑन अस, रिस्पेक्टफुली दे आर एबल टू राइड ऑन अस. दो उसके रीजन है. एक तो देखिए आईबीबीआई के अंदर जो ये जुडिशरी डिसीजन ले रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम द जुडिशरी बैकग्राउंड. मोस्ट ऑफ द पीपल इवन आर नॉट फ्रॉम द जुडिशरी बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम द आईएएस कैडर और सिमिलर गवर्नमेंट कैडर. तो उनको तो अगर उनका एक माइंडसेट है कि जैसे इस समय उनका माइंडसेट ये है कि अगर दे आर रिसीविंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम लॉट ऑफ क्वार्टर्स, इवन एनसीएलटी इज रिसीविंग लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट आईपी कि आईपी बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, just to get you know, so that you know, just to create a sort of fear among us कि हम बदमाशी ना करें या वो ना करें. उसके लिए they want to you know go very harsh against us, as a result of which they want to discipline it. हाँ, चलिए मैं तो डिसिप्लिन, ये उनका यू नो माइंडसेट है ऑफिसर्स का. दिस इज द रीजन फॉर दैट दे आर डूइंग. बट because of not having the judicious mindset, they don't understand the law. कि you know, law very clearly says it's a fundamental law कि क्या कहते हैं, let 100 goats caught free and one innocent should not be caught. अब यहाँ पे ये हो रहा है कि 100 innocents are being caught and under the pretext or under the assumption कि जो एक जिसने बदमाशी करी है वो ना करे.
तो एक बात ये, अब इसके लिए हम लोगों ने ये निपुन जी वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग एंड अनदर सीनियर एडवोकेट्स वर आल्सो पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। वी थॉट कि जितनी भी ये, अब निपुन जी ने हमारे को कहा, इतने अच्छे पॉइंट्स बताए, कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन अब इन पॉइंट्स को सुनेगा कौन? अगर हम यही पॉइंट्स आईबीबीआई के पास जाएं तो आई डोंट थिंक सो दे विल लिसन टू इट। इवन फिजिकल मीटिंग के अंदर जितनी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर ये देखा गया है कि आप जो कहते हो बोलते हो, निपुन जी विल वॉच टू मी, they listen to you, because they are supposed to give you the time, but ultimately एक प्री माइंडसेट से जिन्होंने ऑर्डर करना था ऑर्डर करते हैं। अब इस चीज को हम किल कैसे करें? इस चीज को किल करने के लिए वी थॉट ऑफ कि जो भी आईपीस अफेक्टेड है, दे हैव समबडी हैज टू बेल द कैट, एंड जो अफेक्टेड आईपीएस हैं, दे आर द मोस्ट अफेक्टेड पर्सन। उनका क्या जा रहा है? तो उनके लिए ऑलरेडी 3 महीने, सॉरी साल, 2 साल, 3 साल का सस्पेंशन है। We thought of creating a, in our earlier meeting, we thought of creating a platform for them कि you get united, and इस जो भी आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं, अभी डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर जा रही हैं, आई थिंक 3 या 4 हाई कोर्ट्स ने तो फेवरेबल डिसीजन दे दिया, whereby they have quashed the proceedings of IBBI. Despite quashing of those proceedings, IBBI is still going on, holding others guilty, holding IPs guilty. अगर हम सब लोग वो उस हाई कोर्ट्स के पिटिशंस जितने भी हैं, यानी कि क्लब करवा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जॉइंट पिटिशन करके फाइल कर दें, चाहे किसी एसोसिएशन की तरफ से हो या उनकी आपस में मिल के हो, निपुन जी विल गाइड अस एंड टेल अस कि वी शैल डेफिनेटली गेट अ रिलीफ। निपुन जी ने 3, 4, 5 बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए कि इन पे फॉल्स ही है। मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है शायद आईबीबीआई का, इट रिक्वायर्ड टू बी रीविजिटेड। I just remember एक लेटेस्ट एक सुप्रीम कोर्ट की आईबीसी में जजमेंट आई थी मिस्टर सोदी के केस में। वहां पे ये चैलेंज कर दिया गया था कि जो 95 के अंदर हम रिपोर्ट देते हैं वो इट इज अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और अगेंस्ट द पर्सनल गंटर, बिकॉज इट वायलेट्स हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। दैट इट्स समथिंग वेरी समथिंग। तो क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए चैलेंज नहीं कर सकते? हमारा राइट नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, और जहां पे डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन पे आई थिंक आईबीबीआई इज द ओनली फर्स्ट अथॉरिटी हु इज पुनिशिंग वी पीपल। एक बात ये तो चलिए मैंने एक पार्ट में कर दिया, लेकिन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई जस्ट टेल यू, हम लोग अगर काम कर रहे हैं, कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है इंसॉल्वेंसी का, वो एज फार एज इंटरप्रिटेशन एंड एटीट्यूड ऑफ आवर ऑनरेबल आईबीबीआई इज कंसर्न, you will get caught how much precaution you take or not take. यानी कि आप बच ही नहीं सकते। अब मैं कह रहा हूँ, अब निपुन जी तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। अब मेरे पास कोई भी आप अपना केस ले आइए, मेरा केस आप चेक कर लीजिए, जितने मैंने केसेस करे हैं, 100% उसके अंदर कोई ना कोई आप ऐसे पॉइंट निकाल देंगे जिसके केस मेरे लिए डीसी मेरे को पैनलाइज करने के लिए तैयार है। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट, अब चलिए एक छोटी सी बात मैं आपको और करता हूँ। फॉर द लास्ट 3.5 years आई एम फाइटिंग विद द आईबीबीआई कि आप भैया एम्पैनलमेंट जो करते हो, जो कि एक बेसिक आपका पर्पस होता है, आप 6 महीने के लिए एक को पैनल करते हो, 6 महीने के लिए दूसरे आईपी करते हो। यू पीपल आर ऑल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड दे आर नॉट एबल टू रेक्टिफाई इट। इसके अंदर उनको कुछ नहीं करना, कहीं पे कोई अमेंडमेंट नहीं लानी, ओनली थिंग इज दे हैव टू सिंपली मॉडिफाई देयर इंटरनल प्रोग्राम लाइक दिस। जब भी हम उनको कहते हैं तो कहते हैं हाँ नेक्स्ट बार हम पक्का कर देंगे, नेक्स्ट बार हम पक्का कर देंगे, और ये बातें चल रही है पिछले 2 सालों से। नंबर 1। नंबर 2 बात, if you see the published accounts of the IBBI, it was delayed for more than 2 and 3 years. So it happens, we need to accept this fact. जब नई एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो इट हैपन। तो हम भी अपनी अगर इसी तरह से रिपोर्टें जो हमारे लिए वो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है 15 दिन, 45 डेज, 30 डेज, एक दिन भी आप लेट कर दो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि लॉ इज डेवलपिंग एंड वी नीड योर शेल्टर एंड गाइडेंस। और इसका सोल्यूशन मेरे को सिर्फ यही लगता है कि हम वेबिनार्स करते रहेंगे, निटी ग्रिटी टेस्ट करते रहेंगे। वी नीड टू गेट यूनाइटेड, स्पेशली जो बंदे अफेक्टेड हैं, दे शुड गेट यूनाइटेड एंड दे निपुन जी सर जैसे हमारे पास एडवोकेट्स अच्छे हैं जो फ्री में उनके लिए काम करने के लिए शायद तैयार होंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी। जैसे हम लोग वेबिनार्स वगैरह कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शैल गेट सम रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। और ये आईबीबीआई के लिए शायद उनके लिए भी एक थोड़ा सा गाइडिंग फैक्टर होगा कि हाउ कोर्ट इज इंटरप्रेटिंग देयर
their orders and something like that, and they can also wisely act against those orders and this thing. तो यही एक मेरे को कहना है कि let's get united, especially जो affected persons हैं, they should form their आजकल तो आसान है, WhatsApp group बनने में 1 मिनट लगता है. Similarly, you can if you have intention, you can get together. और इस तरह से हम IPs अपने आप को सेव कर पाएंगे. नहीं तो सर जितने हम एक दूसरे को यहाँ नजर आ रहे हैं ना, ये आने वाले टाइम में अगर हम काम कर रहे हैं और हमारी काम करने की आगे नियत है, तो it is we also be get caught in the web of DC. This is all I have to say. Thank you very much for giving me time. थैंक यू मनोज जी. आपने बिल्कुल बड़ी रियलिस्टिक बात कही कि हम सबको मिलके यूनाइट हो जाना चाहिए जो अफेक्टेड है, तो ही चेंज ला पाएंगे. अकेला ला नहीं पाएगा. और उनको अभी पता नहीं चल रहा कि वो किस तरह से डिसीजन दे रहे हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं. काम करने उतरते हैं और टेंशन पहले आ जाती है कि ये करना है या नहीं करना, या इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. मैंने बहुत से आईपी से सुना है, नाउ दे डोंट वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू टेक मच केसेस. तो योर सजेशन इज वेरी गुड. अनुराधा जी, ये अम्ब्रेला जो है हमारे मनोज जी के पास है, उनको सबको यूनाइटेड एक ही अम्ब्रेला में आना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ये मेरा ही मैं कहना जब भी इनको सुनती हूँ ना, तो मेरे को यही लगता है कि बहुत प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात ये कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है. बातें हम कितने भी कर लें, लेकिन सॉल्यूशन ये है अल्टीमेटली. अब मैं आर के गुप्ता जी को बोलूंगी कि वो हमें एनलाइटन करें इसके बारे में. आर के गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में, और उन्होंने 1988 में क्लियर किया था. और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगी उनके बारे में बताते हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने विचार व्यक्त कीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है. कल तो इसका 6 निकला था. प्रदीप वर्मा, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए. Thank you very much. First of all, to very learned speakers, Advocate CA Nipun Singhvi ji and CA and IP Manoj Kumar Anand ji. I am simply a CA. I am not an IP, but I have helped hundreds of professionals to become an IP, and I am in touch with them on a regular basis. I have read the code more than 100 times. Even professionals after becoming IP are in touch with me on a regular basis. मेरे जो व्यूज हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं जो मेरे को स्पीकर्स ने बोले हैं, और मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं. सबसे पहले मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं. पहली बात तो यह है कि जैसे हमारे लर्नर स्पीकर निपुण सिंघवी जी ने बोला कि दे आर टेकिंग क्यू फ्रॉम जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड मेनी इयर्स बैक, बट ऑन पेपर आई वुड लाइक टू से दैट independent exercise of mind by IBBI and IPA is manifest in their show cause notices. This is the first thing. Number one. Number two is definitely it is regarding justification of roles and responsibilities by IBBI, DC and IPS monitoring agency. So definitely everyone has to justify his presence. IBBI being a regulator, they are justifying their role. IPA's monitoring agencies, they are also under pressure to definitely point out the deficiencies of IPs. Third point is regarding the roles and duties of IP. I would like to submit that many of us are not full-time IPs. For some, it is just a part-time. They are just testing the waters, whether to jump in or not. We are operating on PPP model. PPP model is पूछ के practice. We have become IPs, but we don't know the subject, the regulations, and the acquisitions being put on us. That is another point. Next point I have noted is that
there should be a system of damages being awarded in case an IP is acquitted. So this point we can put that definitely, like courts, they impose certain costs in case an accusation or a case is not built on sufficient grounds. So there should be damages also. So that point we should see. Another observation is regarding the committees, which our very learned speaker Nipun Singhvi told us. But I beg to differ on this, because like in courts, there are single member bench, there are division bench, there are larger benches. So I personally see no infirmity in constitution of a single member bench also. Another point I would like to say is that discipline is the key, and discipline is the key for an IP. So let us be knowledgeable, disciplined, and conformist, because unless we know our roles, responsibilities, duties, and we try to bring in unionism or politics into this profession, like the parent institutions, the three premier institutions which are already under cloud by the government and other agencies, we are doing no favor to our profession, the parent profession, or the profession we are entering into. So these were some of my very brief observations on the deliberations, on the very learned expressions by CA and Advocate Nipun Singhvi and Manoj Kumar Anand. Since time is very short, so I would like to stop here. Thank you. राधा जी आप म्यूट में हैं. Thank you, Gupta sir. Your points that part-timers are not fit, ये तो I totally agree. This is a teamwork. तो कहीं ना कहीं अपने को अपना एक सेफ्टी नेट बनाना है, जिसमें हमारी नॉलेज ऑफ द कोड अच्छी होनी चाहिए, रेगुलेशंस और रूल्स गाइडलाइंस सबकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. लेकिन फिर भी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें we have some doubt, तो we should take the legal opinion. लीगल ओपिनियन को डॉक्यूमेंट करना चाहिए. किसी चीज को हमने कोई डिसीजन क्यों लिया है उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जैसे निपुण कहा, तो so that the action that has been taken by the IP is justified. Or I would like to add one more point here, that since the law is evolving, we should consider ourselves as student of the subject, being an insolvency professional. If we try to contest the observations of our teachers, our principals in the school, so we are doing us no favor. We should first learn to be conformist. We should be perfect in our knowledge, our discipline and attitude. So that is the first point we should adopt, and that should be the approach. सर गुप्ता साहब, ये तो ठीक है कि हमारी नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए, उसको बार बार हमें रिफर्बिश करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए. लेकिन बहुत से इश्यूज ऐसे होते हैं, क्योंकि ये नया लॉ है, दिन पर दिन चेंज हो रहा है. जैसे निपुण जी कह रहे थे, आज उसका इंटरप्रिटेशन ये है, 2 महीने बाद फिर चेंज हो गया, और फिर कोई नया सर्कमस्टांसेस आ गए, फिर चेंज हो गया. तो हमें डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए, ये तो ठीक है. लेकिन उसके बाद भी हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से हम पूछ सके कि अब मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं क्या करूं. तो उस केस में तो अपन लीगल ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे केसेस में एफसीज या क्रेडिटर्स कॉस्ट बेयर करने को तैयार नहीं होते. मतलब देयर आर सो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस प्रोफेशन. और सबसे बड़ी बात, जैसे मनोज जी ने कहा कि हमें यूनाइट होके इसके सॉल्यूशन निकालने चाहिए, यही एक तरीका है. देखिए, हमारे पास बहुत ही अच्छा कंपोजिशन रहा. निपुण सिंघवी जी is
near perfect on legal issues. Yes. Manoj Singhvi ji is almost perfect on being associative. But my point of view is being a student of the subject. That is the only thing I wanted to point out. सर गुप्ता सर, एक छोटी सी हम्बल सबमिशन मैं आपको करना चाहूंगा. Yes, sir. देखिए, ये जिस तरह की आज की एज है ना, अंबानी जी को देख लीजिए, अडानी जी को देख लीजिए, वो भी तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज मैनेज करते हैं, उनकी टर्नओवर कितनी है. एज फार एज वी पीपल आर कंसर्न, यू नो, वी आर ऑन द एवरेज इन द एज ग्रुप ऑफ 50s. हम जो पार्ट टाइम वाला एलिगेशन है ना, आई एब्सोल्युटली डिनाई दिस थिंग. मेरे भी 2 ऑफिस चलते हैं, ऐसा नहीं है. मेरे भी ऑफिस के अंदर सेम जो प्रैक्टिस का काम है वो पहले भी चल रहा था, आईपी का काम भी चल रहा है. सेम इज विद एवरीबॉडी. तो वी आर नॉट एट ऑल पार्ट टाइमर. वी एनलाइटन आवरसेल्फ, वी डिस्कस एवरीथिंग एंड वी इन द सेंस, सिर्फ इशू ये आ रहा है थोड़ा सा मेरे और आप में क्या फर्क आया बात करने में. आई फुली एंडोर्स योर सेइंग. आप अभी यानी कि यू नो वी आर ऑन द प्रैक्टिकल साइड, यू मोस्ट प्रोबब्ली आर थ्योरेटिकल साइड. थ्योरेटिकली ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है जो आपने कही, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट आल्सो. बट व्हेन यू फेस रियलिटी, व्हेन यू फेस प्रैक्टिकलिटी, सर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ. मैं एक 50 साल या 55 साल का पर्सन है जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसके ऊपर आज तक पूरी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगा, और उसके ऊपर ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा दाग लग जाता है जो कि एक लगना नहीं चाहिए. यू नो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज, सिंघवी सर ने जो कहा, जो थोड़ा सा आप हमारे से डिफर कर रहे हैं सर, बात ये नहीं है कि क्या ये हो रहा है, बात सिर्फ ये है कि एक्सेसिव हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी आर क्राइंग. और अगर हम क्राई नहीं करेंगे ना तो और एक्सेसिवनेस और बढ़ जाएगी. तो दिस इज मेरा एक ही छोटा सा सबमिशन है. वो सबमिशन ये है कि वी शुड नॉट ब्रिंग एज इनटू दिस. देखिए ऐसा है, हमें एज कहां से देखनी है, हमें एज प्रोफेशन से देखनी है, जिस प्रोफेशन में हम एंटर हुए हैं. मेरी भी एज 60 ईयर्स है, आई एम 60 ईयर्स, लेकिन 60 ईयर्स कुछ प्रूव नहीं करते. मैं सोचता हूं कि 35 ईयर्स वाला मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है. तो हमारे जब आईबीसी की ही एज 6 साल की है और हम कहें जी हम 50 साल के हैं, हम 55 के हैं, तो दैट डज नॉट मेक मच सेंस टू मी एटलीस्ट. क्योंकि क्या है कि हमें करना क्या है, हमें अपने आप को सबसे पहले ये देखना है कि भैया अपने अंदर झांको. ऐसा नहीं कि हम अपने अंदर जाके भी नारे लगाना शुरू कर दो, उससे कोई और मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए. क्योंकि क्या है कि जो एक मिनट, क्योंकि जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है ना, ये इन्फेक्शन वहीं से आया है. हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ही ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं इस चीज से, और यही अगर हम इन्फेक्शन यहां पर भी ले आए ना, आईबीबीआई क्या कह रहा है, देखिए ऐसा होता है, आईबीबीआई इज मच एप्रीहेंसिव कि ये वाले प्रोफेशन भी उसी राह पर ना चल जाए जिन पर इनके पेरेंट्स चल रहे थे. वहां पर क्या है, वही पॉलिटिक्स, वही एसोसिएशन. एक आदमी कहता है यार वो मुझे जानता है ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. वो अगर हम यहाँ पर वो चीज नहीं लानी चाहिए हमारे को. दैट वाज माय पॉइंट. प्लीज सर गुप्ता साहब एक सवाल. हाँ, मैं सुनील जी बोलिए. हाँ सर, आपने कहा शुरू में यू आर दी किंग मेकर फॉर 100 किंग्स. नहीं, मैंने किंग में देखिए लगता है शायद ये रिकॉर्ड हो रहा होगा सेशन. हाँ. तो मेरे ऐसा कोई वर्ड आया नहीं है. नहीं, उसका मतलब यही था सर, आपने 100 लोगों को मेंटर किया है जो आईपी बन गए हैं और वो आपके संपर्क में भी हैं. मेरा सिर्फ पॉइंट यही था, नहीं, आई एम अवेयर अबाउट दी. एक मिनट, मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था. मेरा कहना ये था कि आई एम अवेयर अबाउट द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. सर बताइए ना, क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं आईपी की, हम जानना चाहते हैं आपसे. नहीं देखिए ऐसा है, यूं तो मेरा बहुत बड़ा मैंने प्रेजेंटेशन भी तैयार किया हुआ था, बट टाइम इज नॉट विद मी. आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन. सुनेंगे सब लोग, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, सब सुनेंगे आपकी बात. आप थोड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या है आईपी की वो मेरे को बताएं. वही तो आज बेसिक इशू है कि देखिए ऐसा है, अगर हम उस चीज को डिस्कस, अगर आप मुझे, जिन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है आईपी की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का, वो उसके काम को रिव्यू कर रहे हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं, डीसी के ऑर्डर दे रहे हैं. नहीं तो अगर सब लोग एग्री करते हैं तो आई कैन शेयर.
some of my thoughts? बताएं सर क्या और क्या फिर क्या है कि उसके क्योंकि इतने एक्सपीरियंस हमारे पास, इतने लर्नेड निपुण सिंघवी जी भी हैं, मनोज कुमार आनंद जी भी हैं, तो दे विल आल्सो दे मे वैलिडेट और नॉट माय व्यू पॉइंट, बट अगर लोग सुनना चाहते हैं तो आई कैन स्पीक फॉर अनदर 5 मिनट्स। बोले सर, सब सुने। प्रवीण जी, तो आप मेरे को जरा वो मेरे को पीपीटी शेयर करनी है, तो 5 मिनट लगे, ज्यादा नहीं। आई टेक जस्ट 5 मिनट्स। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आईपी क्या फेस करता है फील्ड में वो हाँ प्रवीण जी, आर यू एबल? 1 मिनट, अगर आपने मुझे कोस्ट बना दिया तो फिर मैं कर सकता हूँ। जस्ट आई विल मेक पोस्ट। हाँ शायद वो तभी होगा ना। अनुराधा जी प्लीज मेक पोस्ट। अनुराधा जी सुन रहे हैं आप? सर मैं सुन रही हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। लेट मी प्लीज। चलिए, जब तक ये अब होस्ट करते हैं, आई वुड लाइक टू शेयर विद माय फेलो प्लीज कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, कि हम आईबीबीआई चेयरमैन के साथ मीटिंग करें, बिकॉज आज तक उनसे कभी कभी भी किसी ने फेस टू फेस मीटिंग करके अपनी ये प्रॉब्लम नहीं बताई, तो वो हम वी आर ट्राइंग टू हैव अ मीटिंग विद हिम एंड शेयर आवर। कोई बात नहीं, ऐसा मैं पीपीटी के बिना ही बोल देता हूँ मैडम, कोई इशू नहीं है। अगर आप कर पाए तो अच्छा है। हमें मेरी फोटो छाप रखी है, मेरे को कोर्स नहीं बना पा रहे, क्या प्रोग्राम है एनीवे, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। वो तो ऐसा नहीं आप देखिए सर, आप देखिए। नहीं, वो ना मेरे को यहाँ पर शो होगा कोर्स, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम इनटू दिस। तो मेरा पॉइंट सिर्फ देखिए ऐसा है कि आई हैव नोटेड डाउन सर्टेन पॉइंट्स, क्या क्या इश्यूज आते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। सबसे पहला क्या इशू आता है कि जिस पर जो बोर्ड या आईपीए ग्रिल करता है, सबसे पहला तो ये वो कहता है कि जी आपने जो है सीओसी के पीछे छुप गए। आपने कहा कि जी मैंने सीओसी से पूछा, अरे भाई कुछ पॉइंट्स ऐसे जो सीओसी से पूछने ही नहीं थे। भाई आप अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग वैल्यूअर्स के लिए पूछ रहे हैं। सर यू आर नाउ कोवर्ट सर। ओके, जस्ट लेट मी शो। तो सर एक बात कहना चाहूंगा मैं गुप्ता सर, कि हमें जो लीगल प्रोडक्शन ऑलवेज लेना चाहिए, डिस्पाइट के अगर हमको आईपी की फीस भी शेयर करनी पड़े तो वी मस्ट हैव टू लीगल प्रोडक्शन। सर की स्क्रीन फ्रीज हो गई है सर, लगता है। जैन सर, गुप्ता सर एग्जिट हो गए शायद। सर टाइम बहुत हो गया, वी हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू आल्सो डू, प्लीज यू नो कन्फाइन टू योर टाइम आल्सो। अनुराधा जी टाइम 8 बज गए, एक्सपायर होने वाला है, प्लीज कंक्लूड द मीटिंग। Okay, sir. I'd like to thank all the learned speakers. और इनका जो सुन के वाइब्रेंट एंड लर्नर, थैंक्स टू ऑल द लर्नड एक्सपीरियंस स्पीकर्स, और जिन्होंने प्रैक्टिकल व्यू दिया है, और जो हमारे टॉर्च बेयरर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन के। तो आई लाइक टू थैंक जीपा ऑल्सो एंड AIPA ऑल्सो फॉर हेल्पिंग ऑल द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड hosting these kind of webinars which are very important for us. Thank you so much. Thanks a lot for our respected moderator, guest of honor and learned speakers and our participants also, all of us. सर आप भी उनमें हो, एक आपको भी हम थैंकफुल करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।